बच्चे चलिए आज क्लास 9th की एक कंसेप्ट वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को एक कॉमन डाउट होता है कि वर्क जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट से आपके टीचर्स ने आपको क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको हमेशा एक डाउट रहता है कि हाउ कैन वर्क बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क तो वर्क है और वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है ना। तो इसको हम आज एक सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने एक डेफिनेशन क्लास 9th में पढ़े हैं और आपके टीचर्स ने आपको ये पढ़ाए हैं कि वर्क इज डन, आप ऐसे लिखते हो ना, वर्क इज डन व्हेन a force is applied, a force is applied and the displacement of the body happens in the direction of applied force. Right? This is what your teachers they do, right? That work is done when a force is applied and the displacement of the body happens in the direction of applied force. That means necessarily they try to tell you that force is acting on a body. Suppose this is a body B and applied force F acts here, and the body is displaced in the direction of applied force. In the direction of applied force, then work is said to be done. So you are about to understand this concept only, but bit mathematically, right? That force is applied and the body is getting displaced in the direction of applied force, but in general, in our everyday life, it doesn't happen every time. It is not necessary. Please look at the definition of the work done first, and should I rub it? No. Suppose this is the body B and you applied a force F and the body moves in the direction of this, means your displacement and the force, right? This is what you need to understand. आपको देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और स्केलर्स और वेक्टर्स की डिफरेंसेस के बारे में। सो फोर्स को आप वेक्टर बताए होंगे टीचर्स ने और डिस्प्लेसमेंट को भी आप वेक्टर बताए होंगे टीचर्स ने, राइट? सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर है, राइट? एंड व्हेन दे एक्ट इन द डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, देन वर्क इज सेड टू बी डन. Now question arises that if the body is not displaced in the direction of applied force, suppose this is your original direction of the force and suppose the body is displaced along this direction, making one angle theta, then work is done. As per your definition, work is done, but force is applied and the displacement happens in the direction of applied force. So what you need to do here is the displacement vector D
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में आपकी d cos थीटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे और इस डायरेक्शन में हम d sin थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को ये देखिए, आप डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दीजिए। इफ दिस एंगल इज थीटा देन आपने इसको d cos थीटा लिख दीजिए और इसको आप d sin थीटा लिख दीजिए, राइट। तो अब डेफिनेशंस को, वर्क डन की डेफिनेशंस को आप पढ़ो। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड and the body is displaced in the direction of applied force. Now direction of applied force, now this is our direction of applied force, right? And in this direction now d cos theta is working, d cos theta is working. So we will be writing work done is f d cos theta, where d cos theta is your displacement and F is your force. So work is F d cos theta now. Now as you all know that F d cos of angle theta, and when this will be maximum, when this will be 0 and when this will be negative, you can tell it now because the value of cos theta you know already. When cos theta, the value you want to write, then cos theta equals 0 or 1 or minus 1 when theta is 90, yeah, to get 0 90 degree, to get 1 0 degree, and to get minus 1 180 degree, right? So if theta, cos theta will be giving you the value of 0 or 1 or minus 1, that means work will be accordingly done as 0 work or maximum work or negative work or positive and negative work. समझ में आ रहा है? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो गया? For the class 9 children, I am telling you, for the class 9 children, very basics of the force as a vector quantity and displacement as a vector quantity. So mathematically, when we write this one, work done is F dot d. This is the scalar product of the force and the displacement. So scalar product is always two vectors. If they are acting on a particular body, two vectors, scalar product is what? The vector 1's magnitude, the vector 2's magnitudes along with cos of theta. Cos of theta. So F is a vector, d is a vector, so f d cos theta. Work done is a scalar quantity, you must be knowing. So work done is f d cos theta. Now as I told you, theta will be assuming different values, then work done will be called differently. So when is work said to be maximum? When is work said to be maximum? You tell me from here that when the force and displacement are in the same direction. When the force and displacement are in the same direction, then f d cos 0. Cos 0 is 1. So f d, you will be getting maximum work done. So work done is maximum when f d cos 0 degree or f d value will be getting 4, right? And work done is 0 when f d cos
90 degrees you will be putting for, and this will assume the work of 0. And work negative will be there, when FD cos of 180 degree will be getting. This will be your negative FD, right? Because minus 1 value, cos 180 degree will be giving you minus 1 value. So this is how we tell in class 9th about the work done can be positive, work done can be 0 or work done can be negative. कोई डिफिकल्ट तो नहीं हो गया? मैथमेटिकली इसको समझाना पड़ता है, बट इन रियल लाइफ आपको मैं बताता हूं अभी कि वर्क डन कैसे, कहाँ आप 0 मानोगे, कहाँ आप 180 का जब अप्लाई होता है नेगेटिव मानोगे, और कहाँ आप मैक्सिमम मानोगे. ठीक है, ये देखो आपने एक फोर्स अप्लाई किया on a box, let us say on a box, right? And this box is moving in the direction of the applied force. Suppose this box is moving from point A to point B in the direction of applied force. तो आप बताओ अभी क्या होगा? फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी and the body is displaced in the direction of applied force. So FD cos 0 degree, cos 0 is 1. So FD, work done, is maximum. That means you should be happy that you are doing work. मतलब बायोलॉजिकली भी मैं आपको समझा दूं तो क्या है ये कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होना है, राइट? आप खुश होना है, मतलब कि आप फोर्स अप्लाई किए टू डिस्प्लेस ए बॉडी और बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो मैक्सिमम वर्क डन और वर्क इज डन, एफडी, राइट? अब देखो, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स एफ, बट somehow the body is moving in the direction of this way, making one angle 90 degrees. आपने फोर्स अप्लाई किया बट बॉडी ऊपर उछल के ऊपर जा रहा है 90 डिग्री एंगल बना के, राइट? तो इसमें क्या होगा कि कोई आपको पैसे देने वाला भी पैसा नहीं देगा, ठीक है? कि आपको क्या बोला था कि फोर्स अप्लाई करके बॉक्स को डिस्प्लेस करिए, बट फोर्स यू आर अप्लाइंग and the box is displaced in the perpendicular direction making 90 degrees. So FD cos 90, that means 0 work. FD cos 90, that means 0 work, right? तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि 0 वर्क हम कब करते हैं, राइट? देखिए, हम कोई एक सूटकेस पकड़ के जा रहे हैं, सूटकेस की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वजह से जो सूटकेस की वेट है किधर एक्ट कर रहा है, आप बताइए? डाउनवर्ड. एंड सपोज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज योर मूवमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग हॉरिजॉन्टली एंड फोर्स यू आर अप्लाइंग इज वर्टिकली. सो फोर्स यू आर अप्लाइंग इज वर्टिकली ऑफ, बिकॉज आप सूटकेस को पकड़े हो, और डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, यू आर वॉकिंग, सो डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग हॉरिजॉन्टली. दैट मीन्स आपको क्या होगा? 0 वर्क होगा. सो यू आर डूइंग अ 0 वर्क. समझे? सिमिलरली एक कुली अपना लोड लेके चल रहा है, ठीक है? लोड देखिए, वेट कहाँ? एक्टिंग डाउनवर्ड. तो आपकी जो ये स्कल है, ये फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहा है? अपवर्ड, राइट? आप अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट आप आगे चल रहे हो, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो लोड की डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, दे आर मेकिंग वन एंगल 90 डिग्री. दैट मीन्स 0 वर्क इज डन. सो आप झगड़ना नहीं कुली से कि मैं पैसा नहीं दूंगा, 0 वर्क कर रहा है, राइट? वो फिजिकली अपना मस्कुलर
स्ट्रेन तो ले रहा है ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आप बाद में पढ़ोगे, बट वो फिजिकली अपना एनर्जी तो लॉस कर रहा है ना किसी भी एंगल से। तो झगड़ना नहीं यहाँ पढ़ के कि सर ने बता दिया कि वर्क इज 0, सो मैं आपको पैसा क्यों दूं, राइट? डोंट बी ए हीरो, राइट? आपने खाली समझना है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स व्हेन इज वर्क डन 0। समझ गए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री एज्यूम करेगा तो वर्क डन विल बी 0। और कभी कभी एक फनी इंसिडेंस होता है कि आपने एक फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट अस से देयर इज ए पोल, ठीक है? एक पोल है यहाँ, और इस पोल को कोई आपने क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मोमेंट यू अप्लाई फोर्स अपवर्ड and you slip down. Moment you apply force upward and suppose the pole is slippery and you are slipping down. That means what is the angle made between them is your force is upward and you are slipping downward. The angle is 180 degrees. That means FD cos 180. FD cos 180. Cos 180 is -1. So minus FD. So work done is there, but it is negative. Work done is negative. That means you are not able to apply the force in the, you are not successful in taking the body in the direction of your applied force. You are applying a force upward, but the body is displaced downward. That means the angle made between is 180 degrees, right? It is not 0 degree. Had it been आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ऊपर जाता, तो फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट हैपनिंग बोथ आर मेकिंग 180 डिग्री एंगल, सो यू आर डूइंग वर्क, पॉजिटिव वर्क, राइट? बट ये अगर स्लिप मार रहा है, अगर स्लिप हो रहा है तो 180 डिग्री होगा एंड यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव वर्क डन, राइट? तो ठीक है, आज के लेसन्स में ये आप अच्छे से समझ जाना और नेक्स्ट क्लास में मेरे से इंटरेक्ट करके बताना कि डिड यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वर्क कैन बी पॉजिटिव, work can be 0 and work can be negative also in our everyday life and in all situations in physics scenarios, right? So concept matters. What matters is mind matters, what matters is concept matters, right? So आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है. Okay, good day, thank you.